तो व्हाट्सअप गाइस, कैसे हैं आप सब लोग? वेलकम बैक टू द चैनल। एंड गाइस, टाइम हो रहा है 9:57 एंड वी आर गोइंग जिम गाइस एज यूजुअल। तो गाइस, क्या कहते हैं, कल हमने वर्कआउट करा था उसका बाइसेप्स एंड ट्राइसेप्स का, आई मीन आर्म्स का। और आर्म्स का वर्कआउट कल करा था, तो एक्चुअली मेरे फ़ोन में बैटरी कम थी, इसलिए मैं अपना फ़ोन लेके नहीं गया और इसलिए कोई वीडियो कल नहीं आई। तो आई गेस इट्स डे 6 और आई गेस डे 7। तो हम एक डे को कभी स्किप नहीं करेंगे, तो वीडियो चलती रहेगी, क्योंकि नहीं डली तो क्या हो गया, वर्कआउट तो चल ही रहा है ना। तो आप घबराना मत। आज फिर वो गाइस बैक, टुडे इज बैक डे एंड हैवी प्रेसिंग रहेगी गाइज आज भी। एंड आई एम गोइंग टू ट्राई ये, अगर आपने वो 2-3 वीडियो देखी हो सीबम की भी और हाडी चॉपमैन की, तो उसमें वो ट्रेनर है उनका हैनी रैमबॉड, उसका वर्कआउट मैं करूँगा, मतलब उसका ही वर्कआउट करूँगा आज। 2-3 एक्सरसाइजेज है उसमें न्यू, तो वही सारी नई एक्सरसाइजेज करूँगा। नहीं मतलब वो है मतलब मैंने करी हुई एक्सरसाइज जो भी करी है, बट उसके स्टाइल से करूँगा मैं ये। मतलब पहले वो वाली एक्सरसाइज, पहले वो, क्योंकि एक्चुअली अब तक तो मैं अपनी एक्सरसाइज करता था ना, कि मतलब पहले ये एक्सरसाइज करनी है तो पहले ये करनी है। और अब मैं सोच रहा हूँ कि मतलब जब बैक करा करूँ ना, तो डेडलिफ्ट हफ्ते में एक ही बार करूँगा, जैसे बैक वाले दिन। एक्चुअली क्या होता है ना, मतलब बैक पे जब हम डेडलिफ्ट करते हैं काफ़ी ज़्यादा क्या हैवी डेडलिफ्ट करते हैं, तो लोअर बैक पे काफ़ी इफेक्ट पड़ता है। तो इसलिए डेडलिफ्ट थोड़ी कम एंड हैवी प्रेसिंग ज़्यादा। एंड थोड़ा बीच में 2-3 दिन से डाइट भी ढंग से नहीं हो पा रही गाइस। कल मम्मी नहीं थी घर पे एंड आज भी नहीं है, इसलिए थोड़ी डाइट की थोड़ी प्रॉब्लम हो रही है। वरना जिम जाने में कोई वो नहीं है, जिम जाएंगे हम। एंड रात थोड़ा लेट हो जाएंगे तो जोमेटो करेंगे खाने के लिए। देखते हैं क्या बढ़िया मिलेगा जोमेटो पे आज हमको। एंड एक दिन गाइस ऐसा भी होगा कि मतलब फुल डे वेटिंग भी होगी, कि मतलब डाइट पता लगेगी आपको कि डाइट क्या चल रही थी, या डाइट में मैं क्या ले रहा था। एंड जो मैं बल्किंग कर रहा था, कि अब मैं बल्किंग नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मेरा वेट अब एक जगह स्टेबल हो चुका है, 85-86 अराउंड 85-86। तो मैं इसको 90 ना करके, क्योंकि मेरा पेट निकल रहा था। अब मैं उसी मतलब जो भी डाइट चार्ट में फॉलो कर रहा था, आई गेस मैं 2700 से 2800 कैलोरीज ले रहा था, तो मैं अब 400-500 कैलोरीज कम कर दूंगा। आई गेस 2100 या 2200 कर दूंगा, 2100 या 2200 कैलोरीज। एंड अपना गाइस, क्या कहते हैं, पानी टाइम पे पियो, प्रोटीन खाओ जो भी आप ले रहे हो। एंड मैं रिकमेंड करूंगा, जो पतले लोग हैं या जो बल्किंग कर रहे हैं, वो सिंथेसिस का ले सकते हैं, BSN चॉकलेट फ्लेवर। एंड और भी मार्केट्स में बहुत सारे हैं, बट जो मैंने ट्राई करा है और जो मेरे को सूट करा है और जो रिजल्ट्स जिसके निकले हैं, वो मेरे लिए BSN ही था, सिंथेसिस का। एंड तो यही चीज़ है गाइस। जिम आ चुका है, आप रास्ता देख के रास्ते से समझ गए होंगे, इतनी हिल रही है गाड़ी। हम देख ले गाड़ी कहाँ कैसे लगेगी। ये लग चुकी है गाइस गाड़ी अब हमारी। और लेट मी नो गाइस कि आपने क्या वर्कआउट करा आज। एंड ग्रेट इंटेंसिटी से वर्कआउट करो गाइस, एंड अपनी डाइट चार्ट फॉलो करो, एंड अपना प्रोटीन लो टाइम पे, एंड घर वालों को खुश रखो। 4 चीज़ें गाइस। तो I'll see you in gym guys. If you stay in your comfort zone, that's where you will fail. You will fail in your comfort zone. Success is not a comfortable procedure. It is a very uncomfortable thing to attempt. So you got to get comfortable being uncomfortable if you ever want to be successful. But where do you go to? You wake up on a morning, it's cold, it's wet, it's dark, you've got no cartilage in your knee, you've got shitty shorts, whatever it is that's the issue today. Keep talking. You've got these problems, right? I need you to keep talking about what you were just saying. It's warm on the couch. That's Your it. missus says stay in That's bed. it.
It's comfy, it's cozy. You've got work later on. You had an argument last night. You're slightly hungover. God, I know every motherfucker ain't gonna do what I'm gonna do. So this is how you level up. That's how you level up. I know there's a whole bunch of people with that right there. That fires me up. That makes me fucking happy what you just said. That brings joy to my life right there. You have to decide if you are willing to do the things to put you in that category. Rich people don't sleep 8 hours a day. That's a third of your life. It ain't but 24 hours in a day. You cannot be sleep 8 hours a day. You can't live in LA and wake up at 8 o'clock in the morning. It's 11 o'clock on the East Coast. The stock market been open 2 hours. They already making decisions about your life and your ass was asleep. Because I know there's so many people that have the ability and just refuse to get off that couch. Refuse to study a few more hours. Refuse to go deeper, to go further. And that's where I gain the advantage. It's so easy to be great nowadays, my friend, because most people are weak. Most people don't want to go to that extra mile. Most people don't want to find that extra because it sucks. It's miserable. It's lonely. You talk about that you were kind of, lonely by yourself. I was the same way. And that used to hurt me growing up. Now I fucking thrive in that shit. That's the only place to be. Yeah, nothing changes and nothing changes, man. We'll sit around forever wondering, well, what if I was a dog catcher? Would I be the best? What if I was Every day we change the world. But to change the world in a way that means anything, that takes more time than most people have. It never happens all at once. It's slow. It's methodical. It's exhausting. We don't all have the stomach for it. What if it's a mistake? It's a mistake. Rest assured. What do you know? You're going to stumble around, right? And what's going to happen is this. You're going to not stay in stasis. You're not going to wander around in circles. And I see people like that. They said, well, I never knew what to do, and now I'm 40. It's like, that's not so good. That's not so good. And you might say, well, and there is a literature, too, that suggests that people are a lot more unhappy when they look back in their lives about the things they didn't do than they are about the mistakes they made while they were doing things. That's how they get you to give up. They say it's not that simple, Vinny. So what's the truth? That it is. I want people to understand that they're not alone, that there are other people feeling exactly the way they're feeling, that their behavior is not insane, that they have a disease, and it's not their fault. There's a very famous kind of line that people don't change. I happen to know that people do change, and I see that every day. I see people getting better. I see the lights in their eyes come on. There's a million excuses I could make to rationalize not getting up early, doing the ice bath, and going for a run. There comes a time when all these potential excuses turn into fuel that motivates you to keep going. You gotta get out there. You gotta give it everything you got, whether it's your time, your talent, your prayers, or your treasures. Because remember this, you will never see a U-Haul behind a hearse. If you want to know something about yourself, sit on your bed one night and say, what's one thing I'm doing wrong, that I know I'm doing wrong, that I could fix, that I would fix? You meditate on that, you'll get an answer. And it won't be one you want, but it'll be the necessary one. It's the whole issue. People have a feeling that they can change, but they have no effort. They don't want to get in the game because they feel it's just too much time and it doesn't work. And I tried it and it didn't work. And then they give up and then life just goes on. It's seamless. You don't see it. It's just the way you've been living. And my older brother, who was 12, got into an electrical accident and he died in my arms. And really come to terms with that I was the one who got to live. That this life that we live, it's a privilege. And when I really started to take that in, I felt this tremendous urge to
do something with my life, to do something that mattered. At some point, everything's going to go south on you. Everything's going to go south, and you're going to say, this is it. This is how I end. Now, you can either accept that, or you can get to work. You can't stop. You can't quit. You can't say, I'm a failure. You're not a failure. You're not. You're a wonderful, strong, intelligent youngster. Take advantage of that. Trust in God. Trust in yourself. Until you say, yeah, I'm gonna take action. Nothing changes if nothing changes, man. And I'm not preaching at you. I'm just, I just want to remind you, because I've spent a lot of time in my life sitting around wanting things to change, and not being able to make them change, and not thinking I could. And I wish somebody had told me that earlier sometimes, that in order for something to change, there needs to be change. You cannot stand still, because the world moves away from you if you stand still. And there's no stasis, there's only backwards. And so if you're not moving forwards, then you're moving backwards. How much harder will you work in this offseason now to get back to the championship? I'll push myself to exhaustion. Kobe, we thank you for your time. I feel like we sort of focus on right ways and wrong ways too much. And I think it's, in a sense, sort of scary to just be born and live life. And I understand the idea of kind of grasping onto a particular thought of wanting to kind of feel like you somehow have a handle on the unknown. But you know what? The unknown is the unknown. Every time you have changed, you feel pain. You stepped out of one relationship to another and you feel pain. You leave one neighborhood to another and you feel pain. You go from one job to another and you feel the fire of transition. See change as growth. See change as transformation. See change as evolution. See change as necessary. See change as critical. See change as inevitable. Do something. Stop being fucking scared if you have not jumped on the bandwagon of doing exactly what the fuck you want to do, which is skiing for the next 3 years, or working at a job that's not what your parents want or what society wants. Do something. Stop being fucking scared. And so enough parents, the kid that's sitting right now at a desk and saw this in a feed and you hate your fucking job, enough. Stand up, get the fuck out of here, and do you. Live your life. You got one life. And so if you're not willing to be a fool, then you'll never start anything new. And if you never start anything new, then you won't develop. And so the willingness to be a fool is the precursor to transformation. And that's the same as humility. And so if you're going to write your destiny, you can do a bad first job. You're going to get smarter as you move forward. When you can learn to do things when you don't want to, when you don't feel like it, when you're tired, when you can learn to push yourself to do them, that's when the world opens up to you. That's when success knocks at your door. There will never come a time when you can just happily coast through life. It's hard to stay governed by anxiety. It's hard to be inconsistent. It's hard not to have daily disciplines. It's hard not to believe in yourself. It's hard to be broke. It's hard to be poor. It's hard. It's all hard. So choose your heart. What I am telling you to do is chase after that version of yourself that you know you could be. What happens when I decide for myself that I'm going to do something different? You've got the gift of life. You have the privilege of being here. Quit playing small. You were meant to do great things. Nothing changes if nothing changes, man. The world ain't all sunshine and rainbows. It's a very mean and nasty place, and I don't care how tough you are, it will beat you to your knees and keep you there permanently if you let it. You, me, or nobody is gonna hit as hard as life. But it ain't about how hard you hit. It's about how hard you can get hit and keep moving forward.
People say you can't do that. You can do anything. We are God's highest form of creation. There is nothing on the planet that will equal us. Every bad thing that has ever happened to you is your fault. Now, I use the word fault to shake people up that you are never, ever, ever, ever a victim unless you choose to be. Everything in your life will change. You're always in control. And a man provides. If you don't protect what belongs to you, then sooner or later, it belongs to someone else. It goes for your land, your wallet, your home, your country, everything. It is your job as a man to protect it. The story of the whole goddamn world. You don't hate yourself. You don't think you suck. You're not the imposter. You're not insecure. Somebody taught you that. 2008, we had the third consecutive failure of the Falcon rocket for SpaceX. Tesla almost went bankrupt. We closed our financing round 6 p.m. Christmas Eve 2008. It was the last hour of the last day that it was possible. We would have gone bankrupt 2 days after Christmas otherwise. And I got divorced. That was like rough. If things had just gone a little bit the other way, both companies would be dead. The reason there's gonna be 1 billion motivational views today on YouTube is that people love the feeling of being motivated. They don't like putting in the work to do something about the feeling. For 10 years, I heard every person I know making fun of me. I heard every person I know telling me it was that I was wasting my time. I've had every I know when I tell them what we're gonna do, and by the way, we've done it by now, laugh at my face. And I'm sure you guys can relate to that. You know, very few people bet on the underdog. But if you would have, you would have won big. And that happened to be us. We bet on ourselves. Work like hell. I mean, you just have to put in, 80 to 100 hour weeks every week. And then all those things improve the odds of success. I found that nothing in life is worthwhile unless you take risks. Nothing. Nelson Mandela said, "There is no passion to be found playing small and settling for a life that's less than the one you're capable of living." Do you think Elon Musk has work-life balance? No. Do you think Steve Jobs, when he was alive, had work-life balance? No. Do you think Bill Gates? No. Henry Ford? No. Original Heineken? No. So if none of those people that created the wealth of the world had work-life balance, why do you think you're going to have it? Why? Because you deserve it? I don't think so. You deserve what you get in life by working hard. I'll say this again, but sometimes you have to let other people's dreams for your life die for yours to live. At the end of the day, only execution matters. So if you have big dreams, if you have goals, something that you're trying to accomplish in your life, you're going to have to execute against that. If you're willing to pay the price, and you're willing to do the work, and you're willing to take the time, and you're willing to consistently get up when you... Actually, घर पे आज मम्मी है नहीं ना, तो मील देख रहा था, मील क्या खाऊंगा मैं, तो मैंने ज़ोमैटो से ऑर्डर करी है अभी, काफ़ी टाइम लग गया उसी में ढूंढने में कि क्या खाऊं क्या नहीं खाऊं। एट लास्ट फिर मैंने ऑर्डर करा दाल मखनी एंड 2 पनीर के पराठे, सही मील हो जाएगी रात को। एंड अभी घर पे जाके क्रेटीन लेंगे, क्रेटीन लाना भूल गए। एंड यार कभी आपके साथ भी ये होता है क्या कि मतलब जब टाइम होता है ना, तो कुछ चीज़ चाहिए होती है वो मिलती नहीं है। मेरे साथ भी यही हुआ, घर पे मैं अपना सिपर ढूंढ रहा था और एक तो मेरा ब्लैक वाला सिपर पता नहीं कहाँ खो गया, और एक ब्लू वाला सिपर था, उसको ऊपर वाली कैप ही नहीं मिल रही, पता ही नहीं कहाँ खो गया यार, क्या ही हो गया एकदम से। मैं हर जगह ढूंढ ली, मैंने हर जगह ढूंढ ली, कहीं नहीं हुआ। तो ये तो खैर चलो गाइस अलग बात है। तो बैक में गाइस हमने आज हनी रैमबोड वाली करी है, एंड उसमें एक एक्सरसाइज हमने अपनी डाली थी, वो मैंने शायद नहीं ली है। एंड फोरआर्म्स की भी मैंने एक एक्सरसाइज की वो वीडियो शूट करी है, बट मैंने करी 2-3 एक्सरसाइज है, क्योंकि फोरआर्म्स की मैंने इसलिए डाली, मैं जब मैं आर्म्स की करूँगा तभी उसके साथ डाल दूँगा मैं। लेट भी बहुत हो रहा था मेरे को इसलिए। एंड वीडियोस आ चुकी है गाइज,
चैनल को सब्सक्राइब करो, चैनल को शेयर करो एंड नोटिफिकेशन एंड बेल आइकन जो होता है उसको ऑन कर लो, ताकि कोई भी वीडियो अगर तो आप उसे मिस ना करो। एंड सपोर्ट करो अपने स्मॉल कंटेंट क्रिएटर को, बड़े तो बहुत सारे हैं आपके पास, पहले भी मैंने कहा था। एंड जिम जाओ गाइज, ठीक है, मज़े करो लाइफ में। पहले भी कहा था, मैं दोबारा कह रहा हूँ कि मज़े करो लाइफ में, ये ज़िंदगी नहीं मिलेगी दोबारा। तो इसलिए जिम जाओ, चाहे बंदी छोड़ के भागी हो तब जिम जाओ, ठीक है। लाइफ में कुछ स्ट्रेस है, लाइफ में क्या कहते हैं डिप्रेशन है आपको, तो जिम जाओ, ठीक है। आप मोटे हो, आपको लगता है कि मैं मोटा हूँ, जिम में जाऊँगा मुझे लोग क्या कहेंगे, क्या देखेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले आप स्टार्ट रनिंग से करो। अगर आपके पास पैसे नहीं है गाइज, तो जिम घर में होम वर्कआउट करो। मैंने भी होम वर्कआउट बहुत करा है। मेरे पास घर पे इक्विपमेंट्स रखे हैं, एक फ्लैट बेंच है एंड डंबल है मेरे पास, क्या कहते हैं, एक मेरे ख्याल से 10 किलो का, एक 15 किलो का है, रॉड है मेरे पास पूरी, वेट से बढ़िया, इतने हैवी नहीं है। बट हाँ कि मैंने स्टार्टिंग जैसे कुछ लोग होते हैं ना, जिम में जाते हैं, 2-3 महीने जिम करा, फिर वो उसके बाद मतलब उनकी बॉडी को आदत पड़ती है 1 महीने बाद, क्योंकि 1 महीने तक आपको मिक्स कराते हैं। जब कि कोई भी ट्रेनर के पास जाओगे आप जिम में, तो आपको मिक्स एक्सरसाइज ही बोलते हैं कि चेस्ट की एक ही दिन में आप चेस्ट भी कर लो, बैक भी कर लो, बाइसेप्स भी, ट्राइसेप्स भी, लेग्स भी, इसको मिक्स कहते हैं, ठीक है। बट जैसे एडवांस लेवल होता जाता है, फिर आपको मतलब उसकी आदत पड़ती रहती है, तो फिर वो रूटीन चेंज करते हैं, मंडे चेस्ट, देन बैक, फिर ट्राइसेप्स। तो घर पे आप आराम से वर्कआउट कर सकते हो, कोई इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम्स नहीं है। और अगर आपके पास डंबल्स भी नहीं है ना, तो कोई फर्क नहीं पड़ता, आप डंबल ही मत लो, आप पुशअप्स लगाओ। पुशअप्स एंड पुलअप्स आर द बेस्ट होम वर्कआउट्स जो आप घर पे कर सकते हो, बहुत ईजी है वो करना। एंड अगर आपको पुशअप या पुलअप्स की वीडियो चाहिए, मैं पुशअप पुलअप्स की डाल दूँ कैसे करते हैं। एंड आजकल तो क्या कहते हैं यार, कि कितने पार्क्स में ये सब इक्विपमेंट्स लगे ही होते हैं, क्या कहते हैं लटकने वाले, ठीक है, बारबेल्स, मतलब जो बारबेल कह रहा हूँ। एंड तो आप यहाँ से भी स्टार्ट कर सकते हो गाइस, अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो, ठीक है। एंड इसकी वीडियो भी लाऊंगा कि मैं बिगनर्स की मतलब वर्कआउट करने का स्टाइल क्या होता है। एंड अगर आप जिम में जा रहे हो, तो आपको अगर बिगनर हो आप, तो आपको स्ट्रेचिंग कैसे करनी चाहिए, या फिर वो सब वीडियोस धीरे धीरे आएंगे, जैसे प्रोग्रेस होगी। एंड शुरुआत में इतना ज़्यादा प्रोटीन जरूरी बिल्कुल नहीं होता, कि आपको अगर ये लगता हो ना कि मेरे को पहले दिन ही जाना है जिम में और प्रोटीन लेना है, मेरे को क्रेटीन लेना पड़ेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3 महीने आराम से जिम जाओ, पहले आपकी बॉडी को ना वो चीज़ अडेप्ट करने दो कि हाँ भाई मैं जिम जा रहा हूँ एंड मेरी बॉडी को फिर कौन सा प्रोटीन सूट करेगा। अगर आप पतले हो तो आप गेनर खाओ, एंड अगर आप मोटे हो तो फिर अपनी डाइट उस हिसाब से मेंटेन करो। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं गाइस, मतलब ये एक जो क्या कहते हैं ना बॉडी बिल्डिंग या वर्कआउट जो ये होता है, ये फील्ड है, बहुत बड़ी है। ऐसा नहीं कि मतलब हम बस जा रहे हैं जिम में वर्कआउट कर रहे हैं और आ रहे हैं। कुछ एक्सरसाइज अगर गलत कर ली तो क्या कहते हैं बहुत वो इंजरी हो जाती है। तो ये सारी चीज़ें देख के चलनी पड़ती है। ऐसा नहीं कि मतलब आपने कोई भी डंबल उठा लिया, कैसी भी प्रेसिंग कर दी। अगर आप चाहे वो ट्रेनर आपको ट्रेन करे, चाहे वो आप यूट्यूब से देख के, मेरी वीडियो से देख के वो कर रहे हो, इंस्पायर हो रहे हो, या आप उस चीज़ को देख के डेडिकेटेड हो रहे हो, ठीक है, आप उस चीज़ को देख के, मेरी वीडियो को देख के कर रहे हो सब चीज़ें। तो यही है गाइस कि मतलब वर्कआउट करो, बट ठीक है ना। बॉडी जैसे कहते हैं ना कि गाड़ी की सर्विस होनी जरूरी होती है, गाड़ी खड़े खड़े जंग लग जाता है, तो ऐसी ह्यूमन बॉडी भी होती है। अगर घर पे रहोगे ना पड़े हुए, तो बॉडी में जंग लग जाएगा, ठीक है ना। तो इसलिए वर्कआउट करना ज़रूरी है, चाहे रनिंग हो, चाहे वो घूमना हो, चाहे वो शाम को घूमना हो, सुबह पार्क में घूमना हो, बहुत ज़रूरी है। शरीर से पसीना निकालना बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़्यादा। एंड गाइज और कुछ अगर चाहिए तो तुम्हारा भाई तुम्हारे लिए हर समय खड़ा है, कोई टेंशन की बात नहीं है। एंड हमारा घर आ चुका है, तो अभी हम आपसे विदा लेते हैं। फिर हम मिलेंगे आपको कल 10 बजे ही। एंड बाय बाय गाइस, मिलते हैं छोटे से ब्रेक के बाद। टेक केयर।